Hello friends, this is PRATIK Kumar Singh and you are watching our channel Study with me. In this video we going to do our chapter first of real numbers of class 10th. In this video we completed exercise 1.2. In our previous videos we completed our chapter first basic notes and the exercise 1.1. So now we're going for our question number 1, that is, so in this question we have to find the prime factors of given number. So first is 140. So now we have to check 140s can be divided by 2 and many digits, like, so we have to write the smallest number, so it is 2. So we write smallest number 2 and divided it, so it comes 70. After that 70 also can be divided by 2, so it's 35, and after that 35 can be divided by 5, so it reminders comes 7, and 7 is 7, so answer is 1. So the factors of the number 140 is 2 into 2 into 5 into 7, or we can say 2 square into 5 into 7. So now we move on our another question, and the question is as like question number 1. So the digits are only changed, so it is 156. So we also do as like factor of this number, so 156 can be divisible by 2, so the answer comes 78, and we know that we can also divisible 78 by 2, so it comes the answer 39, and we can divisible 39 by the 3, so 39 can divisible by 3 is 13, and 13 can be 13 is equal to 1. So the factor of 156 is 2 into 2 into 3 into 13, that can be also written by the 2 to the power 2 into 3 into 13. So now we do our next question, that is 5005, and this question can also be doing by prime factor. So the factor of 5005 is 5, so it becomes 1001, and 1001 can divisible by 7, so it becomes 143, and 143 is divisible by 11, so it becomes 13, and 13 is a prime number, so it becomes 1. So the factor of 5005 is 5 into 7 into 11 into 13, so it is the answer. So our next question is in this question we have to find the LCM and SCF, and also verify this question by LCM into SCF is equal to the product of the two numbers. So our first question is 510 and 92. This is as well second question, but we do it because it is hard than first. So how this can we do? So first of all we have to find the SCF. So we find it by the division method. So first of all we divided it by 92, so it going 5 times, and the answer becomes 460. When we subtracted it, it becomes 50, and now we divided 92 by 50, so the question becomes 1, and then we also subtract it, so the remainder comes 42. Now we divided 50 by 42, so it gonna 1 time, and 42 here. Now we subtract it, so it becomes 8, and now 42 is divided by 8, so it becomes the 5. Now so the remainder comes 2, so now we divided 8 by 2, so it becomes it gone by 4 and becomes the remainder 0. So our HCF is 2. So now we have to find the LCM, and then after we can verify this. So we as we know that the formula of this SCF into LCM is equal to the product of two numbers, so we have to find the LCM first. Now so finding LCM, this is very easy trick, we can rarely do things. So 510 and 92 as a common factor of 2, so it becomes 255 and 46. Now we divided by 2, and it comes to 155 and 23.
Now we divided it by 3, so 255 multiplied by 3, so divided by 3, so it becomes 85 and 23. Now by 5, so 85 by 17 and 23, and 17 bans 17 and 23 bans 21. So it is our LCM. Now we have to do multiply, so we find the LCM. So 2 into 2 into 3 into 5 into 17 into 23. सो अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो अभी देखते हैं. 2 2 4, 4 2 12, 12 5 60 and 60 into 17 is equal to 1020 if we solve in our notebook area. and after that 1020 का अगर हम 23 में करेंगे so our answer becomes 23,460. so this is the LCM of our this question. So now we are moving to our verification part of this question. Now we are moving to our question number 3. That is हमें इसमें LCM और LCF फाइंड करना है, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. तो सबसे पहले अपना पहला क्वेश्चन करते हैं जो कि है 12, 15 एंड 21. तो अब मैंने इन तीनों का पहले तो निकालने पड़ेंगे फैक्टर्स, तब हम इसमें से इसके LCM और SCF फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकालना है ना, इसलिए. तो सबसे पहले हम इसका SCF निकालेंगे. तो 12, 15 और 21 के पहले हम फैक्टर कर लेते हैं, उसके बाद SCF निकालेंगे. तो 12 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, और जो 15 का होगा वो 3 इंटू 5 और 21 का 3 इंटू 7. तो SCF निकालने के लिए हमें ये चेक करना पड़ता है कि इसमें सबसे कॉमन क्या है. तो इसमें 3 कॉमन है, तो इसमें हम 3 लिख देंगे. उसके बाद अब हमें LCM निकालना है. तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो जो कॉमन नहीं है उनको लिख लेंगे. तो इसमें अनकॉमन क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू, और ये हमारा जो 3 है इनको हम 3 बार नहीं सिर्फ एक बार लिखेंगे. तो क्या होगा हमारा, तो 2 2 4, 4 5 20, 27 140 एंड 143 420. Now we are moving to the other part of this question, that is 17, 23 and 29. So now you can see that these are the prime numbers, so we have not the factors of this. So how can we do this type of question? Let's see. So 17 factors is equal to 17 into 1, as it is 23, 23 into 1, as like 29, 29 into 1. Here you can see the common is 1, so SCF is 1, and the LCM is to get by the multiply of 17 into 23 and 23 into 29. That becomes the 11,339. So this question is solved. So in our next question we have to find the LCM. So in this question, if we read carefully, we can read that SCF we have to given is 9 and the numbers are 306 and 657. So we are write the given numbers. Two numbers that are given us, that is 306 and 657, and the SCF that is given to us, that are 9. So we in this question now we find the LCM. So for finding the LCM we use the formula that we use in to find the LCM and SCF. So what type of formula that is? Product of two numbers is equal to the LCM into SCF. So only we have to putting the value and we have to find the answers very easily. So LCM we have to find, and the SCF is 9, and the product of two numbers is 306 into 657. So solving it, we have to take the 9 in the divide position. So when we divide the 306 by 9, we get the answer 34.
So when we multiply the 34 by 657, we get the answer, when we multiply it we get the answer 22,338. इस क्वेश्चन में हमें ये चेक करना है कि अगर 6n कोई डिजिट है तो वो क्या कोई भी डिजिट जीरो जो नेचुरल नंबर होगा उस पर एंड होगा कि नहीं। तो हमें यही चेक करना है, तो हम अपने जैसे कॉपी में लिखेंगे टू चेक 6n digit can end by digit 0. We know if the number end with digit 0, it should have 2 and 5 फैक्टर। मतलब हमें जैसे ये पता है कि अगर कोई भी डिजिट 0 पे एंड होगी तो उसको 2 और 5 का फैक्टर चाहिए। तो हमारा जो 6 है वो 2 इंटू 3 है। सो जो ये हमारा 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 है, इसमें जो 2 है ओनली, लेकिन 5 नहीं है। सो द गिवन डिजिट हैव द फैक्टर 2 बट नॉट 5। सो द गिवन जो ये गिवन 6n डिजिट है वो 0 पर एंड नहीं होगी। तो यही हमारा जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया था वही है। अगर किसी भी डिजिट को 0 पे एंड होना है तो उसमें 2 और 5 दोनों के फैक्टर का होना ज़रूरी होता है। नाउ वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट इज क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हमें इन नंबर्स को बताना है कि कंपोजिट हैं या नहीं, अगर हैं तो क्यों हैं। सो जो हमें गिवन में दे रखा है उसको हम इसमें लिख लेते हैं। सो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें ये इसमें चेक करना है कि ये जो नंबर्स हैं वो कंपोजिट हैं या नहीं। सो वी आर राइटिंग दैट टू चेक दीज नंबर आर कंपोजिट। नाउ वी आर प्रूफ इट। सो वी राइट हियर चेक और प्रूफ। सो जैसे कि मैं पता ही है इसमें हमें कंपोजिट नंबर बताने हैं, तो पहले इसमें हमें एक ऐसा कॉमन फैक्टर ढूंढना पड़ेगा जो इन सभी में है। सो इसमें जो कॉमन है वो है 13। तो हम 13 को बाहर लिख लेंगे और इसमें 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। अब इसके पहले ब्रैकेट वाले को हम सॉल्व कर लेंगे तो 77 प्लस 1। सो 13 इंटू 78 यहाँ पर ये हमारा एक कंपोजिट नंबर वैसे बन जाएगा। मतलब हमारे पास अभी 2 टर्म्स हैं। तो उसके बाद उसको हम और फैक्टराइज कर सकते हैं 13 इंटू 6 में। सो अब इसमें हम मतलब इसका थोड़ा थ्योरी लिखेंगे। जो नंबर है हमारा 13 और 6, इनका ये खुद का जो फैक्टर है, मतलब एज खुद के ये फैक्टर हैं, तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। मींस ऐसे नंबर जो पेयर्स में हों और अपने खुद के फैक्टर्स रखते हों उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। इसको हम प्राइम नंबर ही बोल सकते हैं, लेकिन प्राइम नंबर अकेला भी आ सकता है, लेकिन ये हमेशा पेयर्स में आते हैं। उसके बाद हम प्रूव करते हैं अपने सेकंड वाले को। सो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5. So now we are solved it like that. So here 5 is the common factor, so we write the 1 instead of there the 5 is written. So 1 into 4 into 3 into 2
into 1 plus 1. Now we are solving it. When we multiplied all the digits here, so we get 7 into 6 42, 42 into 4 ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पर 1008 और प्लस 1, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 109। अब यहाँ पर 109 और 5 ये खुद में एक ऐसे फैक्टर हैं जो नहीं दूसरों से कटते नहीं हैं, तो ये भी कंपोजिट नंबर हैं। इसलिए हम इसमें बोल सकते हैं those pairs which have own factors in the pairs form, so these are called composite numbers। ये भी क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया है, बस थोड़ा थ्योरी लिखना है, वो हम लिख लेते हैं। These numbers are also just factor, so it is also a composite number। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि एक सर्कुलर पाथ का एक फील्ड है जिसमें एक गर्ल है सोनिया, वो 80 मिनट्स लेती है एक राउंड करने के लिए, और जबकि जो एक रवि है वो 12 मिनट्स लेता है उसी काम को करने के लिए। अगर मान लीजिए कि दोनों लोग एक ही पॉइंट से एक ही टाइम पर और एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो कितनी देर बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम अपने वो पे करते हैं। जो सोनिया के द्वारा टाइम लिया गया है वो 80 मिनट्स है और रवि के द्वारा वो 12 मिनट्स है। हमें अब इसमें मिनिमम टाइम फाउंड करना है कि मतलब कम से कम कितनी देर बाद, मतलब इसमें कॉमन सेंस लगाना होता है कि कम से कम बोल रहा है या ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा है, उस हिसाब से इस क्वेश्चन को करते हैं। तो कम से कम कितनी देर बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। टाइम टेकन व्हेन दे मीट, इसकी हमें फाइंड करना है। तो जब बात आती है कम से कम की मतलब मिनिमम की तो हम एलसीएम यूज़ करते हैं, और जब आती है मैक्सिमम की तो हम एचसीएफ यूज़ करते हैं। तो हम इसमें एलसीएम यूज़ करेंगे। 18 और 12 का हम एलसीएम लेंगे, इसको 2 से करेंगे डिविजिबल। 9 and 6, अगेन 2 से, 9 and 3, अगेन 3 से, 3 and 1 and then 3। We multiply these। 2 into 2 into 3 into 3, 2 to 4, 4 to 12 and 12, 3 ja 36। The minimum time they meet again is 36 minutes। our exercise has finished here। Thank you for watching this video, and I also want to tell a basic thing for this question that you can easily do this question, that is मैक्सिमम मीन्स मैक्सिमम के लिए हम एचसीएफ यूज़ करेंगे यहाँ पर, और जो मिनिमम है उसके लिए हम यहाँ पर एलसीएम यूज़ करेंगे। तो यही एक मेन चीज़ होती है ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए। थैंक यू very much। This exercise has finished here। We will meet again in our next video, so don't forget to like this video and subscribe the channel, and also leave a good comment for us।